सबसे बड़े पावरफुल बिजनेसमैन है वो पहुंचे हुए हैं। चाइना के ओर से जो है एक प्रेसिडेंट शी की तरफ से खास राजदूत को भेजा गया है। भारत से एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ पर हैं। तो कई मुल्कों से नेता आए हुए हैं। सारा सारा संसार देख रहा है कि ट्रंप जो करने वाले हैं उसका उन पर क्या असर पड़ेगा, और वो चाहते हैं कि ट्रंप की सरकार के साथ संपर्क करे और ये संपर्क शीघ्र शुरू करे, इसलिए सारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल संजय, अगर हम भारत के लिहाज से बात करें, क्योंकि ट्रंप मोदी को अपना दोस्त बताते आए हैं और हमने देखा कि जब वो यहाँ पर कार्यक्रम में भी शरीक हुए थे अपने पिछले कार्यकाल में, भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप से उनके इस कार्यकाल में? Defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith. That I will bear true faith. And allegiance to the same. And allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation. Without any mental reservation. Or purpose of evasion. Or purpose of evasion. And that I will well and faithfully discharge. And that I will well and faithfully discharge. The duties of the office. The duties of the office. On which I am about to enter. On which I am about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Vice President. तो जेडी वांस जिन्होंने शपथ ले ली है, अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति वो बने हैं, परिवार के साथ मौजूद, और उनके चेहरे को आप पढ़ सकते हैं। अब से कुछ देर में बस ट्रंप भी अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहले आपने जेडी वांस को देखा जिन्होंने उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली, और यहाँ पर ट्रंप ने उनको बधाई भी दी है। पीठ उनकी थपथपाई है, ये आप देख सकते हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पल है जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, और इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल्स केंद्र बिंदु है। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 4 साल के भीतर दूसरी बार कैपिटल हिल्स में उनकी वापसी हुई है, और इससे पहले वो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे। और देखना ये होगा कि जब वो शपथ ले लेते हैं तो उसके बाद क्या बड़ी बातें वो कहते हैं। हालांकि इरादे वो अपने right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. आज से अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप युग की शुरुआत हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। आज से अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप राज होगा, और उन्होंने अपने इरादे पहले ही जाहिर कर दिए थे। दूसरे अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि सत्ता में बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, फिर सत्ता से बेदखल होते हैं, और 4 साल के भीतर एक बार फिर से कैपिटल हिल्स में उनकी वापसी हुई है। ट्रंप जिन्होंने कहा था कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, वो युद्ध को रोकेंगे, और जो अवैध प्रवासियों का मुद्दा है उसको लेकर के क्या ऑर्डर वो साइन करेंगे। कुछ देर का इंतजार और, लेकिन फिलहाल आप देखिए तालियों की जो गड़गड़ाहट है, ये तालियां सिर्फ कैपिटल हिल्स में नहीं गूंज रही हैं। इन तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज, इन तालियों की गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ ली है, और एक बार फिर से अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही जो अमेरिका में 4 साल का वनवास था लोगों के लिए, वो खत्म हो गया है, और एक नए युग की, नए अमेरिका के, जिसमें अमेरिकियों का हित सबसे पहले होगा, उसकी शुरुआत होने जा रही है। और लगभग जो अवैध प्रवासियों का मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा, हमने देखा इलेक्शन कैंपेन में भी। और यहाँ पर देखिए अब अमेरिका में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रगान।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। और आप देखिए कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में तोपों की सलामी भी दी गई। बाइबल पर हाथ रखकर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है। पिछले कार्यकाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने शपथ लेने के बाद स्पीच भी दी थी। उनका भाषण लगभग 17 मिनट तक का रहा था। इस बार भी उनके भाषण का इंतजार सभी को है, क्योंकि बड़े फैसले डोनाल्ड ट्रंप लेने वाले हैं। कुछ ऑर्डर्स पर वो साइन करने वाले हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। लेकिन ये आप देखिए कि जो ये खास समारोह इस वक्त कैपिटल हिल्स में चल रहा है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले चुके हैं। ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की बिल्कुल आपने सही कहा। तालियों की गूंज केवल वहाँ कैपिटल हिल में नहीं, सारे अमेरिका में सुनाई दे रही है। और यहाँ वॉशिंगटन में जहाँ पे हम खड़े हैं, जैसे ही उन्होंने शपथ लिया, शोर मच गया। यहाँ पर लोग झंडे लहराने लग गए, गाने गाने लग गए, और एक ऐसा उत्साह है, एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन चल रही है। और सेलिब्रेशन ये कोई सरकारी सेलिब्रेशन नहीं है, लोग खुद निकले हैं बाहर सड़कों पर, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, बिल्कुल खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि एक नया दौर शुरू हुआ है, जिससे अमेरिका फिर से ग्रेट बन जाएगा। और ये तो शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसका आरंभ अब हुआ है। कम से कम ये लोग मान कर चल रहे हैं। बिल्कुल संजय, उस वक्त बात अधूरी रह गई थी भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो, क्योंकि जो पिछला कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप का रहा है, भारत मोदी को दोस्त उन्होंने कहा था और काफी प्रगाढ़ संबंध हमारे रहे हैं। लेकिन इस बार के कार्यकाल से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं ट्रंप से? देखिए, कुछ तो खबरें अभी सामने आ रही हैं कि काफी शीघ्र ट्रंप इंडिया आएंगे अपने दौरे पे। वो इंडिया को जल्दी विजिट करेंगे, लेकिन कितनी जल्दी विजिट करेंगे ये अभी निश्चित नहीं है। लेकिन जरूर वो इंडिया आने वाले हैं, और उससे पहले सारे संकेत हमारे सामने यही है कि अमेरिका और भारत के संबंध बहुत मजबूत होंगे। एक तो ट्रंप और मोदी की अपना एक नाता है, एक अपनी दोस्ती है, बहुत समय से उनका संपर्क चल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट किया है। और उसके बाद आप देखिए कि जो मार्को रूबियो है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स को संभालते हैं, वो भी भारत के हित में है। विशेष तौर से वो भारत को चाइना के सामने मजबूत करना चाहते हैं, भारत के हाथ मजबूत करना चाहते हैं कि भारत आतंक का सामना दम से कर पाए, जोर से कर पाए, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से कर पाए। तो मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों ही भारत के हित में हैं। साथ में आप देखिए कई अन्य लोग हैं जो टीम में हैं, सरकार की टीम में इंडियन ओरिजिन के हैं। तुलसी गैबर्ड जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, उधर देखिए विवेक रामास्वामी, उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। और FBI के जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं कैश पटेल। तो ये सब जो हैं इंडियन ओरिजिन के हैं, और ये निश्चित तौर से तो नहीं कहा जा सकता कि हर बात पे इंडिया को सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, लेकिन एक बिल्कुल तगड़ा पूल है सरकार में जो इंडियन ओरिजिन का है और इंडिया को सपोर्ट करता है। बिल्कुल संजय, अगर हम वीजा की बात करें, क्योंकि यहाँ पर महीनों का इंतजार है, वीजा नियमों में कुछ ढील को लेकर के इसमें भी हम जो भारतीय हैं, खासकर जो अमेरिका जाना चाहते हैं, वो भी कुछ उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, अब तक तो साफ बात ये सामने आ रही है कि ट्रंप की सरकार जो है H1B वीजा के विरुद्ध नहीं चलेगी। जब हम H1B वीजा की बात करते हैं, ये खास भारतीयों के लिए नहीं है, लेकिन ज्यादातर इसमें भारतीय ही अमेरिका आते हैं। लगभग 72% H1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं। सारी यहाँ पे जो कंपनियां हैं उनमें ये भारतीय H1B वीजा पर आकर उनका काम बढ़ा रहे हैं, नई इनोवेशन कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी सामने ला रहे हैं। तो इनको सरकार नहीं रोकने वाली। तो सरकार का जो टारगेट है, जो इलीगल माइग्रेंट्स है, वो माइग्रेशन नहीं है जो H1B वीजा से आ रही है। पहले टर्म में ये बात सही है कि ट्रंप ने ही H1B वीजा में
जो स्पाउसेस हैं उन पर कुछ पाबंदी रोक लगाई थी, लेकिन अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं आ रहा है कि वो दोबारा ऐसा करने वाले हैं। सरकार के जो मुख्य मंत्री हैं, जो मुख्य सपोर्टर्स हैं, जो भाग ले रहे हैं सरकार में, उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि वो H1B वीजा के विरुद्ध नहीं चलने वाले, और जो इंडियंस H1B वीजा में बैठे हुए हैं, कि उसकी तैयारी में बैठे हैं, कि उसकी चेष्टा में बैठे हैं। Senator Thune, बिल्कुल Chief संजय, हम Justice आपको Roberts, रोकेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को सुनते हैं। Justices of the United States Supreme Court, President Clinton, President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country. Sunlight is pouring over the entire world, and America has the chance to seize this opportunity like never before. But first, we must be honest about the challenges we face. While they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America. As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens, while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people. Our country can no longer deliver services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly. And other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago. Or more recently, Los Angeles, where we're watching fires still tragically burn from weeks ago without even a token of defense. They're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. Trusting to do anything about it that's going to change. We have a public health system that does not deliver in time of disaster yet, and we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases
to hate our country despite the love that we try so dividing today, and it will change very quickly. My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place, to give back their wealth, democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history, and I've learned a lot along the way. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Thank you. Thank you. Thank you very much. तो डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाएंगे. Administration of American patriots, we will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed. For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country. As our victory showed, the entire nation is rapidly unifying behind our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural. And very importantly, we had a powerful win in all 7 swing states. And the popular vote, we won by millions of people. To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. We set records, and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you in the years to come. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a great honor, but in his honor we will strive together to make his dream a reality. We will make his dream come true. Thank you. Thank you. National unity is now returning to America, and confidence and pride is soaring like never before. In everything we do, my administration will be inspired by a strong pursuit of excellence and unrelenting success. We will not forget our country.
We will not forget our Constitution, and we will not forget our God. Can't do that. Today, I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. We will bring prices down, fill our strategic reserves up again, right to the top, and export American energy all over the world. We will be a rich nation again,